Assalamu alaikum viewers, hope so you all will be perfectly fine. Zeb Kazmi here. Today we have to talk about the admissions of multiple universities. They are offering multiple courses. Today we have to discuss about the admissions in Allama Iqbal Open Universities, how to create an account, how to apply, and how to submit their fee via online transactions and online banking. So we have to open Allama Iqbal Open University's website. Swipe your screen and click on the admission OAS. As you can see, there is application for new students, so you can click on this. You have to create your account here. As you can see on the top, create account. If you have already account, then you enter the username and password here and click on login. So you have to click on the right side on apply for new program. You can see here two steps. First is face-to-face programs and second one is open distance learning program. So I will select face-to-face program, and today we are discussing about Mphil. I'm selecting this program and I'm clicking on select program. Application is this. I will open. Here is the form of your admission. So you can select your last degree and all the information about that, and then click on save and complete section. As you can see at the end of the page, this is the second step of completing our process of application. So here you can fill your program type or program of study which you want to select. You have to click on this add program to list. As you can see, I selected this program. You have to save and complete section. The status of program of study is completed. Then you have to enter your personal information, your academic records, then add professional experience, courses information. Then you have to upload your photograph and documents and click on the save and complete section. You can see here my profile is 99% completed, accept all. Then you have to click on the submit application. I am sure to submit my application because I fill all the correct information here. So I click on it. You have to download your fee voucher and pay via ऑनलाइन बैंकिंग. यहाँ पर हम ऑनलाइन इजी पैसा के थ्रू अपनी फ़ी पे करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से ऑनलाइन फ़ी पे कर सकते हैं. इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फ़ी किस तरह से ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं. तो यहाँ पर आप मेरे पास देखें, यहाँ पर बिल पेमेंट का ऑप्शन मौजूद है बिल्कुल ही टॉप पे, जैसा कि आप देख सकते हैं. आपने सिंपली करना है इसके ऊपर टैप. तो यहाँ आपने एंटर करना है, एंटर अ न्यू बिल. यहाँ पर देखिए हमारे पास मल्टीपल किस्म के ऑप्शंस मौजूद है. आपने क्या करना है कि एजुकेशन के ऊपर करना है टैप. यहाँ पर ऑल ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी कि स्कूल्स के भी, कॉलेजेस के भी, यूनिवर्सिटीज़ के भी. तो हमने अगर यूनिवर्सिटी की फ़ीस सबमिट करवानी है तो आप देखें आपके पास यूनिवर्सिटी का ऑप्शन ऊपर मौजूद है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी. हम यूनिवर्सिटी के ऊपर टैप करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं. जिस यूनिवर्सिटी का भी चलाना आपने सबमिट करवाना है आप इसके ऊपर टैप करें. जैसे कि हमने यहाँ पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सबमिट करवाना है तो हम अल्लामा इकबाल के ऊपर करेंगे टैप. यहाँ पर हमसे चलान नंबर मांगा गया है, यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट. फिर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो हो जाएगा जहाँ पर आपका नेम आ रहा होगा, आपका रेफरेंस नंबर आ रहा होगा. आपने सिंपली इसको पे नाउ के ऊपर करना टैप. और आप सिंपली देखें कि आपकी फ़ी पे हो चुकी है. यहाँ पर देख सकते हैं जो अनपेड का स्टेटस है ये एक दिन बाद खुद ब खुद अपडेट होके पेड हो जाएगा. इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. और जो दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं. अल्लाह निगहबान.